मैडम गोटे मजा कथा शुणु मोर मु आज ए चाइल्ड मन करंतु मो माइंड को एक क्वेश्चन आइला मु आमर टीचर्स फोरम रे एटा को पकेली मन करंतु मु आज गोटे स्कूल रे पढुथांती मोर क्लास टीचर को फ्रंट रे एटा आलोचना हेतांता सर किंतु जेहेतु आमे एठी अनेक अनेक लोक अछे तेणु फोरम को गला क्वेश्चन तेणु क्वेश्चन टा आंसर टा अपन देखिबे जेमति गाले भारी पड़िबो तेणु गोटे फोरम को नबार मतलब होची एटा जदि जणे पाखरु आंसर टा न भारी पड़ुची आलोचना माध्यम रे काटू ना काटू भारी किंतु सेटा पुक्त सबूत ऊपर बेस हवा दरकार माने इट शुड बी ए कंक्रीट एविडेंस बेस्ड आंसर हवा दरकार सबुथरे एविडेंस इज ए मस्ट लॉ रे भी एविडेंस मागुचंदी आ साइंस तो ऑटोमेटिकली एविडेंस बेस्ड बाय लॉजिक तो आई थिंक शिवाशी सर को मुझे रिक्वेस्ट करूची फ्रीक्वेंसी जनरेटर को यूज करी 50 हर्ज रो गोटे फ्रीक्वेंसी से क्रिएट करिवे एवं से विषय से कैमराटा से फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऊपर को फोकस करा जिवो एबे तापरे मु आपनकर मोर यूएसबी कैमराटा को वर्तमान मु एक्टिव करबी वर्तमान कैमरा आपनकर फोकस हला आपण माने टिके लक्ष्य करिवे रविंद्र भाई टिके ठीक आइले माने हमर यूएसबी कैमरा रो जो वीडियोटा जेमति का एठी हाइलाइट हबो हमर जो आरएससी बीबीएसआर ना रे जो कॉर्नर टा आसुची आपनकर वीडियो रे स्क्रीन रे सेटा गुडी के फोकस करके देखिबे ताको एले हमें स्पॉटलाइट करबा आसिला आई होप आपण माने डीएसएलआर कैमरा रो व्यू टाको देखुचंती वर्तमान देखा जाउची किंतु किछि शुभुनी ना सुगिवा दरकार नै मु तो कथा कहबी मोर वीडियो मोर ऑडियो टा आपण सुनिबे हां खाली देखा जाउ बाकी व्यू टा आपण को बाय का एबे इंपोर्टेंट काहे कि ना जोठी गोटे फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो अछि भाई हमर हाथ मारिचंती जो यूनिट देर रे आपण सेठी टिके मार्क करिवे तार स्क्रीन रे गोटे रीडिंग से सेटिंग करचंती मे बी कैमरा रे सेटा रिवर्स हेई पारे नहीं ठीक दिखाउ सीधा दिखाउ किंतु से ले 50 हर्ज रे सेटिंग करिवे अर्थ से जो डिवाइस टी आपनकर गोटे गोटे वेराइटी ऑफ फ्रीक्वेंसी को से जनरेट करि पारे किंतु लो पावर रो तार फ्रीक्वेंसी को वर्तमान हमर सर शिवाशी सर ताकू आपण स्पीकर को देबे ए फ्रीक्वेंसी जनरेटर टा आगे 5000 टंकार जिनस आपनकर स्कूल रे रखा जाई पारिबो बुझले सर माने सर ये टिके कहया पे चाहिबी सर मोबाइल ऐप अछि सर फ्रीक्वेंसी जनरेटर सेथे भी आपण जे कोन सी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके आपण साउंड क्रिएट कर परिबे ताल तो आउरी बढ़िया हां हां आपण कहबे दे मु पठे देबी तार लिंक हां आपण निजे मध्य सेठी हमें आपण को परमिशन दबो आपण टिके सुनाबे अन्य मन को ठीक अछि मु टिके जदी थिबो ताको टिके एक्टिव करी कि टिके देखेबे गोटे फोरम रे तो एटा होची बेनिफिट नॉलेज टा बांटी ही कि रहबो
अच्छा तार साउंड टाकू आई थिंक कैमेरा रा साउंड रु नबाक पड़िबो नै कि हाँ वर्तमान मु मोर हेडफोन टाकू नेकिरी से स्पीकर पाखरे अटैच करथिली आपण मानको पाखकू ऑडियो साउंड टा गला कि नै मु जानि पारलिनी ठीक पचारुची हेलो ऑल आस्तिला सर अच्छा सर आस्तिला सेही आस्तिला साउंड सर टा आपण माने सबस्टेशन पाखरे सुनी पारंती किंतु आउ टिके एनर्जेटिक फॉर्म रे सेटा सुखा जाए तो बर्तमान सेटार गोटे प्राइमरी रीजन मु हमरो मेंटर सार को पचारुथिली मेंटर सार कहले सबू सबस्टेशन रे से साउंड टा सुना जाए नाही तार कारण होची ट्रांसफार्मर रो क्वालिटी नेइकिरी से साउंड टा केतबेले जदी लो क्वालिटी ट्रांसफार्मर अछि ताले सेटा सबस्टेशन रे सुखा जाए किंतु भलो क्वालिटी रो सबस्टेशन रे जो ट्रांसफार्मर यूज करा होची सेतरु से ऑडियो साउंड टा आसेनी बोली से कहले मु कहली साल से ऑडियो टा त माने जोठी आसुची कोठु आसुची से कहया कथा जतबेले 50 साइकिल्स पर सेकंड रे करंट टा वेरी करूची कॉइल भितरे तार जो कोर अछि से कोर रे टिके वाइब्रेशन डेवलप करे एवं सेही वाइब्रेशन टा एम्प्लीफाई हेकरी हमकु बड़ आकार टिके सुहे दिस आई हैव लिसन्ड आपण मान भी सुनी चंदी एबे हमें आपण को नेक्स्ट डिवाइस टा देखेबू ऑसिलोस्कोप से जो 50 हर्ज रो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करले हमें वर्तमान ताकू ऑसिलोस्कोप को फीड करिवू एवं ऑसिलोस्कोप रे हमें से 50 हर्ज रो जो वेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्रिएट करूची तार ग्राफ टाकू आपण माने कैमरा द्वारा देखिबे एट गोटे इंटरेस्टिंग जिनस होची आमे माने हमर स्टूडेंट कैरियर रे बही रे किंतु ए भली गोटे कर्व देखिछे इज इट 50 सर 51.5 बोली सर कहउचंदी हमर तो एटा आम मानकर छुआ जीवन रे भाग्य रे न थाए व्यू टा देखिबा किंतु आजिकाली सबुठी यूट्यूब रे देखि दउचे हम माने तेणु यूट्यूब इज ए ब्लेसिंग फॉर अस गोटे पिला जदि चाहिबो मन करंतु बा जण टीचर जदि चाहिबे गोटे ऑसिलोस्कोप रे 50 हर्ज रो ग्राफ टा केमती पास करूची अच्छा कैन इट रन शिवासी सर हम सेटा को रनिंग रे देखे पारिबा जे एटा मूव करूची हां ओहो तो मोर गोटे डाउट थिला मु सर को पचारली तो सर कहले नहीं माने वंस योर सेटअप इज करेक्ट से फिक्स व्यू रे आसीबो से जाबे हो वर्तमान हमें आपन को देखेबू जे जदी सपोज आपण 15 की 20 हर्ज क्रिएट करले फ्रीक्वेंसी जनरेटर रे
से वेबटा केमती आसुची टिके देखिबा एवं ताकू आमे आज व्यवस्था करिचु सेई 15 20 बा 5 10 वेव रो एनर्जी टाकू आमे गोटे एलईडी को दबो एवं एलईडी केमती जळुची 50 रे केमती जळुची आ 5 10 रे केमती जळुची सेटा आपण माने निज आखिरे देखिबे 20 सर कहउचंती वर्तमान एटा 20 हर्ज रे सेटिंग करा हैछि 21.2 तो वर्तमान मजा कथा होची कर्व रो गैपटा देखंतु माने हम आखि कहउची जे गैप चेंजिंग हे जायछि वर्तमान जदि आमे तांको कहबा कि सपोज 10 आड़े जानतु यार हाफ करंतु 11.6 रे एटा सेटिंग करा हला तो ग्राफ इज वाइडनिंग हाँ फ्रीक्वेंसी ऊपर आलोचना हमर जेहेतु होउची तेणु आमे सर मानकू आउर टिके फ्रीक्वेंसी कम करिवा एवं देखेबा जे इफ वी रिड्यूस फर्दर द फ्रीक्वेंसी द ग्राफ आल्सो चेंजेस अच्छा सर कहउचंती टिके रेंज चेंज करिवे नो प्रॉब्लम रेंज चेंज करंतु आमे देखिबा कोन सुविधा अछि सर कहउचंती दिस इज 1 हर्ज इज इट 1 or 0 तापर केते देबे ओ एटा 1 देले इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कर्व वी सी हियर अच्छा एबे हमें सर को रिक्वेस्ट करिवा से 2 3 4 5 रो जो वेव को फ्रीक्वेंसी जनरेटर रो गोटे एलईडी को ग्लो करिवा एवं इन द मीन टाइम से सेटअप रेडी करिया भितरे we may have a question round बा discussion round in between एबे आपण माने काइंडली कोऑपरेट करंतु ए दीटा को सेटअप विषय रे कोन कोन आउ इंफॉर्मेशन नबार अछि बा दबार अछि कोंतु साइलेंट है कि बसिबानी किंतु एक प्रोग्राम फॉर यू ओनली हमें तो एठी निजे करी की देखुछु सर नमस्कार सर नमस्कार कोंतु सर से जो सेटअप टा हला सर सेटा मते एक्चुअली बुझी पाइले नहीं जो साउंड टा क्रिएट हला वाइब्रेशन ट्रांसफार्मर कोर सेटा सर मु बुझी पाइले ठीक क्लियरली अच्छा एबे मु आपन को ट्रांसफार्मर टी खाली देखौछि मते टिके सर ट्रांसफार्मर टा दियंतु एई ट्रांसफार्मर टा नहीं वीडियो यूएसबी वीडियो अछि एले कैमरा रो व्यू रे सर मु आपन को ट्रांसफार्मर टा को देखौछि यस एटा ला गोटे कमर्शियल ट्रांसफार्मर मार्केट रे मिलुछि हम माने आनिगिरी यूज करूछे ए ट्रांसफार्मर रे आपनकर सरफेस टा को टिके देखंतु एई पोर्शन टा लुहा यस कोर दिया हिच सेटा आपनकर चारि पटु को अछि मार्क करंतु यस ए पट्टा आपनकर बेस साइड टा एठी स्क्रू हमें माउंटिंग करूछु कोठी ए चारटा होल रे तणो ए जो कोर एति की मोटा आपन देखुचंती कैमरा भी कहूची जे ताधरे अनेक गुडे स्लाइस दिया हिच हमर जंती ब्रेड रो स्लाइस अछि पाउरुटी रो गोटे केजी किया ब्रेड आपन आनले कि 250 ब्रेड आनले ताधरे आपनकर केते पीस अछि सेटा को हमरो कैमरा देखौची एठी आपनकर मन करंतु 500 पर्टिकुलर सीट जोड़ा है जी वानिश दिया है यस ए सरफेस टा को टिके लक्ष्य करंतु यस विजिबल ए स्लाइस गुडा को एक्चुअली वानिश दिया है कि पूरा टाइट रखिया कथा बेले बेले जतबेले इन कोर्स ऑफ टाइम वानिश टा सुखी जाए सर बा तार क्वालिटी लॉस करे सेतबेले ए पीस गुडा को आपनकर लूज हे जांती टिके टिके एवं 50 हर्ज रो करंट जतबेले जाउची एवं एटा गोटे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सर तेणु
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हिसाब से तो जाले टिके भिड़ी हबो मैग्नेटिक फील्ड पाइका यस सर यस तेणु सेठी गोटे भाइब्रेशन क्रिएट होउची এবং সেই সাউন্ডটা মানে বড় আকারে हमको सुगुची बिकज तार बॉडीटा अछि ट्रांसफॉर्मरटा भीतर अछि बुझ परछ ना यस सर यस सर किंतु तार गोटे विराट बॉडी अछि जो बॉडी भीतर तेल अछि माने गोटे ऑयल दिया हिची यस और से ऑयलटा दिया हिची कूलिंग पाइका सर तेणु कि से गोटे गोटे एम्प्लीफाई हो जाउची साउंडटा तेणु हमको टिके सेठ गोटे हमिंग साउंड आछि यस 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 गोटे साउंड आसे निकी यस हम लाइक दैट साउंड यस सेही साउंडटा हमें आपन को फ्रीक्वेंसी जनरेटर रे 50 हर्ट्ज द्वारा स्पीकर रे सुनाइलु এবং সেই जो साउंडटा हमें सुनिले सेटा ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट साउंड यस यस एबे हमरो सार कहउतले जे जोठी ए जो कोर बा तार जो लैमिनेशंस अछि से माने परफेक्ट टाइट रे पोस्टिंग हेतिबे सेठी आपनकर साउंड बाहरिबो नाही सर तेणु दे आर ऑल क्वालिटी प्रोडक्ट्स एबे मैं आपन को दीटा ट्रांसफार्मर देखेबी गोटे देखेली एटा होची ऑर्डिनरी प्रोडक्ट गोटे हला सर सर एबे गोटे स्पेशल प्रोडक्ट देखेबी आ तार फिनिशिंग ता आपन देखिबे आ सेथुर आपन जानि पकेबे कोठी डिफरेंस आसुची यस सर थैंक यू सर बर्तन टेबल टॉप ऊपर ए ट्रांसफार्मर टा थुआई जी फोकस हबो आपन देखंतु दीटा को कंपेयर करंतु गोटे ब्लैक रो बॉडी लक्ष्य कर समझते यस सर तो से ब्लैक बॉडी रो जो कंस्ट्रक्शन टा को देखंतु से किते क्वालिटी मेंटेन करी की कामटा को करछंती अच्छा रिजल्ट दे आल्सो टेक सम मनी फॉर दैट वी बिलीव सो किंतु पैसा नबाटा बड़ कथा ना बड़ कथा होची द क्वालिटी दे मेंटेन आ ए जो ट्रांसफार्मर रे आपण देखछंती यार ऊपर रो जो जॉइंट गुडा को आखिर देखा जाउची एठी किंतु देखा जाउनी और यार जो कोर मटेरियल टा पड़ी छी कोर मटेरियल टा एते फिनिशिंग मो हाथ मारी के देखौची मो हाथ रे मो अनुभव करूची हाथटा कोठी अटकुनी कोठी लागुनी बट एठी लागुची सो दैट इज डिफरेंस ए ट्रांसफार्मर टार दाम 2000 रुपीस हो मन करंतु ए ट्रांसफार्मर टा आपनकर 500 टका हो कि 400 टका हो सो दैट इज डिफरेंस हाँ वर्तमान आमे सार को जो कहिथिलु आपण माने वर्तमान कैमरा फुणी चेंज हबो फ्रीक्वेंसी जनरेटर धरंतु 5 हर्ट्ज देला कि 10 हर्ट्ज देला से 10 हर्ट्ज रे गोटे एलईडी को आमे ग्लो करिवा एवं से ग्लो टा को आपण माने देखिबे कैमरा जरिया रे लाइट टा को टिके बंद करले हबो सेटा आपण आसिक परे ब्रीफिंग करिवे एबे केते फ्रीक्वेंसी सार दवा 11 हर्ट्ज रु सार कहउचंती हमें एलईडी को ग्लो करिवो अच्छा वर्तमान सार कहया कथा रिपल फैक्टर गुडा को वर्तमान नाही किंतु जतबेले से कहउचंती जे ट्रांसफार्मर को पावर ऑन करिवे सेतबेले यू विल फाइंड द रिपल्स ता विषय रे से निजे आसी की बुझेबे एठी मु उठी जीवी तो वर्तमान आपण मानकर देखि परचंती जे ग्राफ भी चेंजिंग आ हमें एलईडी को टिके फोकस करिवा कैमरा रे आपण माने काइंडली लक्ष्य करंतु जो टेबल ऊपरे जो एलईडी दीटा ट्रांसफार्मर संगे अटैच करा हेची सी पावर ऑन हेची एवं से माने जळुचंती किंतु ठाकुर बत्ती भलिया जळुचंती माने लागुची जेमति कि ता भितरे कि ओटे फ्लक्चुएट करूची तो वर्तमान मु सार को रिक्वेस्ट करीबी ये जो फ्लक्चुएशन टा हमें आपन को देखेलु एलईडी थ्रू रे सेटा 11 हर्ट्ज रो फ्रीक्वेंसी जोगु होउची वर्तमान सर हम ताको कमेबा ना बढ़ेबा अच्छा सर कहउचंती बढ़ेबा 11 रु बढ़े बढ़े कि हमें
50 आड़े जीवा जोटा कि हमरो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी स्टेशन सब स्टेशन तेणु काइंडली focus your eye onto the glow of the LED which is blinking or rather pulsating. धीरे धीरे बढ़ाउछंती सर आपण माने ग्राफ को भी देखंतु एवं एलईडी रो ब्लिंकिंग को मध्य ऑब्जर्व करूछंतु साइड बाय साइड एलईडी रो ब्लिंकिंग टा को टिके आ शो करिया पड़ियो कैमरा रे कटि जाउछि हां सेतिक रे ठीक एबे केते फ्रीक्वेंसी दिहाला सर 43 हर्ज आड़े गलानी आउ टिके कैमरा को सेटिंग कर दियंतु एलईडी रे देखा जिवो बर्तन केते फ्रीक्वेंसी देले 48 49 पाखा पाखी गलानी एवं आपण माने मार्क करि परथुबे एलईडी कांस्टेंट हेगिरी जळुछि फ्लक्चुएशन कमी जाउछि आउ तो आखिरे देखा जाउनी एठी मु देखुछि आखिरे देखा जाउनी आपण को कोन कैमरा रे जदी कोन लागुथो बट मु एठी मो टेबल ऊपर आखिरे देखुछि आउ फ्लक्चुएशन देखा जाउनी कि अनुभव करि होउनी डू यू एग्री विथ मी यस सर Yes. एठी हमें जिनसटा को काकी Yes, sir. आपण को आगे प्रेजेंटेशन कलु बिफोर द टॉपिक आपनकर परसिस्टेंस ऑफ विजन पढ़ाउची तेणु जतबेले गोटे लाइट ब्लिंकिंग करूची गोटे 50 टाइम्स पर सेकंड रे योर ब्रेन विल कंफ्यूज एवं आपन को लागिवो कंटीन्यूअस तेणुकरी हमरो इंडिया रे ऑल ओवर इंडिया पावर जनरेटिंग स्टेशन माने 50 हर्ज रे मेंटेन करछंती किंतु आपनकर जदी सेटा 10 11 आडी की जाई थांता तले आपनकर ट्यूब लाइट मध्य से भलिया ब्लिंकिंग करिकरी जळु थांता सो काहे की 50 हर्ज मेंटेन करा हैची सेटार कारणटा हमें जस्टिफाई करलु बतन से रिपुल टा कोठु आइला मु टिके आपन को पाखो को टिके इनवाइट करछ आपन टिके आसंतु टिके एवं दिपद कोहंतु कि रिपुल फैक्टर टा कोठु क्रिएट हला ता विषय टिके सर मन को आईडिया दियंतु प्लीज Good morning, everyone. Welcome to this session. तो जमते सार कहले वर्तमान हम डिस्कशन करबा व्हाट इज दिस रिपल फैक्टर सो इन ग्राफ यू कैन सी आमे ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी पटे फंक्शन जनरेटर रु 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देले एंड सेही फ्रीक्वेंसी टा को आमे ऑसिलोस्कोप ग्राफ रे देखुचे राइट किंतु मोटी गोटे कथा कहबी आमे फंक्शन जनरेटर रो जो फ्रीक्वेंसी देइचे दैट इज कंप्लीटली साइन वेव फॉर श्योर बट वर्तमान फंक्शन जनरेटर रो साइन वेव को आमे ऑसिलोस्कोप रे देखुचे काइंड ऑफ सॉटूथ और वी कैन से ए ट्रायंगुलर वेव तो जदि आमे साइन वेव जनरेट करी कि साइन वेव देइचे ताहले ग्राफ टा केमिति डिफॉर्म हला तो कारण होची आमे ग्राफ टा जो सिग्नल टा जनरेट कले सेटा ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी को देले एंड ट्रांसफार्मर भीतर वी ऑल नो देयर आर टू वाइंडिंग्स ता ऊपर आमे या परे आमे डिस्कशन करिवा एंड देखिबा कि टू वाइंडिंग्स कोन केमिति थाए फॉर नाउ वी नो कि देयर आर टू वाइंडिंग्स वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी एंड ऑफ कोर्स आमे प्राइमरी साइड रे हमर इनपुट देले and primary side winding is nothing but a big inductor we all know it is a big inductor तो जत्ते बेला हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से इंडक्टर को देले इंडक्टर कोन कला इट ए सेकेंडरी एनर्जी सेठी इंड्यूस हला दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन से निजे गोटे जनरेटिंग स्टेशन भलिया काम कला एंड आमे जहां इनपुट देले आमो इनपुट को से अपोज करिया पे लागिला
एटी साइंटिस्ट लेंस लॉ काम करे. It opposes the cause, a BKM is produced which opposes the cause due to which it is produced. आमे जो इनपुट पावर ताकू देले 50 हर्ट्ज रो साइन वेव से साइन वेव को से अपोज करिया पे चेष्टा करूची, बट आमे तो छाडू ने आम फंक्शन जनरेटर पावर दबारे व्यस्त एंड ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी कॉइल वर्तमान जो बैक ईएमएफ क्रिएट कला सी ताको अपोज करिवारे व्यस्त. सो दुईटा को पावर रो जो रिजल्टेंट फैक्टर आसला दैट रिजल्टेंट फैक्टर एक्चुअली we are now watching in this oscilloscope screen. So this resultant is called the result of ripple factor. The power we are giving to the primary side and ripple coming from the self induction, the resultant is this triangular wave. बर्तमान आमे नेक्स्ट डिस्कशन करिवा कि what is this primary winding and secondary winding and why two windings are there inside a transformer and how it works. Let's see, we'll do the experiments. Okay. So now हम देखिए ट्रांसफार्मर रे प्राइमरी वाइंडिंग कोन सेकेंडरी वाइंडिंग कोन. वर्तमान आपण देखि परछंदी सर को सामने रे गोटे व्हाइट कलर रॉड अछि एंड से रॉड रो गोटे एंड रे गोटे बड़ कॉइल अटैच करा है. दैट कॉइल इज ए वाइंडिंग. इट इज ए वुंड ऑफ वायर्स, ए ह्यूज वाइंडिंग एंड वर्तमान से वाइंडिंग को गोटे तार बाहरी एंड आमे सेठी हमर नॉर्मल घर रो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई आमे जानि जे हम प्लग पॉइंट रे 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रो पावर अवेलेबल अछि. आमे घर रो स्विच बोर्ड रो से प्राइमरी कॉइल को 50 हर्ट्ज रो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करबा. एंड जते बेले हमें 50 हर्ट्ज रो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करले टू द प्राइमरी कॉइल, जो व्हाइट रॉड देखा होची दैट इज नथिंग बट ए आयरन रॉड. गोटे प्लास्टिक पाइप भितर सॉफ्ट आयरन पूरी रखा है. सो दैट इज आयरन रॉड व्हिच एक्ट्स एज ए कोर एंड ऊपर सार गोटे ब्लैक कलर रिंग धरिचंदी दैट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी कॉइल. एंड यू कैन सी इन द सेकेंडरी कॉइल it is getting power. Now we'll discuss from where it collect power. Okay, definitely we'll observe one more experiment. Now sir attached another aluminum ring kind of thing, a bobbin kind of thing. It is a closed ring and he put it inside this iron core. Now going to give 50 hertz frequency to the primary side of this coil. Let's observe what happens. Oh, it jumped. But why it is jumped? We'll discuss on it. Why it is jumped. Now sir is trying something else. Oh, it started floating. When we give power to it, it started floating. So actually what happens and how it happens, we'll discuss on it. Sir, is it due to the magnetic levitation or something? Let me confirm Magnetic you. field is created. Okay, let me confirm you. There is no magnet attached to it. No, sir, And due to Due the to induction. okay, we'll discuss on it whether it is induction or magnet or electromagnet or what, we'll discuss on it. Okay. Sir, mutual induction. Okay, we'll discuss. And one more experiment sir is showing. There is a clock, the wall clock,
and it is without battery. There is no battery connected to this wall clock. It is a normal wall clock without battery. Of course, there is no battery, so it is not working. देखिए कौन हो. Now, sir, put that coil behind this clock, and this clock started rotating. The gap also you can show by camera. The back side, sir, is like this, like this. You can see the gap between the primary coil and the clock. In this gap, the clock is rotating very fast. And we have to find why. So I'll request sir to repeat the first experiment and we'll observe now. The Bengal one. Yes, we can put another lamp also, no problem. Now this is clearly visible that we have a secondary coil. This part is the coil, and two ends of that coil is connected to a bulb. Now this coil is put inside this iron core. The other side of iron core is connected to the primary coil. We give power to the primary coil, and the secondary coil we could able to generate power, and the gap between primary coil and secondary coil is inversely proportional to the power induced. जते पाखो को हमें आसुचे ब्राइटनेस बढ़ी बढ़ी जाउचे एंड जते दूर को आसुचे ब्राइटनेस ग्रेजुअली कमी जाउचे. Yes, it filament lamp, we can visualize it properly. The brightness. Filament just lal hela. Now filament is getting its intensity gradually. Brightness body jauchi, and it is maximum. I'm trying to listen to that sound. Is a drawback of our good microphones. Actually, that sound our microphone treats as noise, so it filters out. Okay, no problem. So now I'll request every one of you to contribute in this discussion. Any idea what you think that why it happens? Actually, all these experiments we have seen now using this primary coil and this iron core, based on same fundamental theory. The theory is same, the concept is same. We are using in different way, but the root concept is same. Yes. Now we'll see another demonstration. Okay. You can see in the secondary coil is attached to two different motors with propeller, and they are in opposite direction. So when we give it power, because of propeller, a torque is created here, which makes the secondary coil rotating. When we change the distance,
Of course, as the distance increased, so induced power decreases. So that power is not sufficient enough to make it rotation. When the power overcomes the friction, it start rotating. Yes. सेंसिटिव माइक्रोफोन दरकार ना हां तार साउंड को जदी वीडियो मोड को नहीं जाए बढ़िया আছে प्लान करो तो सर को 20 सेकंड सेटअप लाउथरे विथ साउंड शुड Sir कहउछन कि we'll try one attempt to make you listen that sound, that humming sound. We request for 2 minutes. Okay, let's see. या साउंड को आपण सुनि परबे सेटा काढी दियंतु कंप्यूटर ऑडियो रे सुनि So actually the secondary coil is connected to a buzzer which get power from the secondary coil and show its effect. discussion about ducts. magnetic power এটা খালি আপন হাইলাইট করো Okay, in this experiment actually we can observe ki what happens. This is the primary coil. This is the primary coil. And this ring, the big ring, is the secondary coil. And secondary coil is connected to a galvanometer. this becomes a magnet right সেটা को আলো watching Okay, sir is showing ki this acts as a huge magnet. Okay. Remember friends, actually we have given 50 hertz frequency alternating current to the primary, and primary this coil now acts as a magnet. Now we keep that coil near to a secondary coil, and secondary coil is connected to the galvanometer. Let's see. The deflection of needle is so high. From theory I can confirm you the deflection of needle is 50 cycles in a second, because we are giving 50 hertz frequency, so 50 cycles. So we confirm that it is a 50 hertz frequency alternating current given to the primary of this coil, and we are doing lot of experiments. Now sir is planning to connect same coil to DC supply, using a lamp in series and DC supply using a lamp in series. and see the vibration of the right that is the so you want to focus there And we'll observe what happens when you give DC to a coil using a lamp in series. You see the galvanometer reading. On kari rakhandu, no problem. Yes, while on it deflects and now it is steady. While off it deflects to other side, now it is steady. You observe, while on it deflects right side
then now it is steady. While off, it reflects left side, then it is steady. But after it deflects once, as much long time we are giving DC supply connected to it, the deflection is no more there. या पर भी हमें डिस्कशन करबा कि एमती काहे होची हमें सप्लाई देकी रखिछु देन डिफ्लेक्शन वंस है कि काहे बंद हे गला constant magnetic field. So is it actually constant magnetic field or something else? Sir, there is no change. Sir, it's constant current No flowing. change. When the current Constant becomes current, constant, so there the is no magnetic- change in flux. There is no change in magnetic flux linked with the coil. So that is why no induction is happening. Okay. For When it induction is to switched happen, there is on, a flux to be changed. Flux When it has is to switched be on, it changed. goes from minimum to maximum. Sir, And now when it okay, I agree. So I'll request sir to check the magnetic effect of this coil by giving DC supply, whether it is a magnet or not. Let's see. Okay. Now we'll give DC supply to this coil. आमे देखिले कि जेतोले आमे पावर देले गोटे थरो गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हला देन बंद हे गला बट विल कंफर्म कि मैग्नेटिक फील्ड भी वंस प्रोड्यूस है कि बंद हे जाउची ना मेंटेन हे कि रहउची विल ऑब्जर्व नाउ वी आर गिविंग डीसी सप्लाई देयर आर सम आयरन alpines in this box and sir is placing the electromagnet. The power is on. You can see as much time the power is on. It is not actually once, it is the continuous in DC supply. There is no changing magnet field as it is DC, it is constant, but it maintains. Constant. But why in the galvanometer reading is only once? Why it is not stay by deflecting? Magnitude of current sir very good. Switch on off bele. Apre constant hochi current na. Sorry, exactly that is not the reason. Any other answer? Yes, we'll discuss. No problem. We'll discuss. Any other answer? Sir, field strength is increasing from 0 to some value. If we talk about the magnetic field strength, so it Okay. changes from 0 to it goes to a value. Then it when we are switching it off, then it comes to 0 again. So there is a Okay. change. So change is making things to work out, I think. But you see in the last experiment we seen that the value changes from 0 to peak value and it maintains in the peak value. There is no change, but still the alpines are connected to this coil. That is because of the steady current which is flowing that has a magnetic field. Yeah. So that is attracting the pins. But we are talking about the bulb glowing or getting the output in the secondary coil. That only can happen when we have a induction process ongoing. Okay, let me reveal the concept. Yes, ma'am, you are right. Let me reveal it. Actually, जेतेबेले हमें primary रे power देले, we'll observe first in DC. जेतेबेले हमें switch on कले, the voltage changes. Yes, I will confirm you कि हमें एठी जो DC supply देथिले, that is the value is 220 volt DC. So जेतेबेले हमें 220 volt रे DC supply primary coil को देले, at that moment the voltage in the coil changes from 0 to 220 and then it is maintained at 220. So
Giving power to a coil will create electromagnet. Giving voltage to a coil, it will create a electromagnet. But change in power to a coil will create electric flux. Right, ma'am? Yes, sir. And The flux actually, linked with the coil is changed. Sir, Right. excuse me, voltage and power, both of them are similar. Are they same? sir, actually, this coil has some resistance, right? And we are applying the voltage. And as it So has when the some voltage will resistance, change, sir, excuse me, when the voltage will change, then magnetic flux will change. That's what we used to say. But here power and voltage, are they similar? no, let me confirm this. Why I'm telling power sometimes, let me confirm it. When it change the voltage, let's assume the resistance of the coil is X, right? Let's assume it's X ohm. So when I change the voltage, at the same time, as the resistance is fixed from Ohm's law, the ampere also changes. And power is nothing but the multiplication of voltage and ampere, right? So as the voltage changes, at the same time, power consumption with the coil also changes. So both are similar thing. We can say the change in voltage, or we also can say change in power. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Now sir is showing the experiment, which actually can clear our mind why the change in magnetic field is important for induction, but a steady magnetic field is not important. Now sir has a strong magnet set of magnets. It's a neodynamic magnet. It's a very strong magnet. And as it is a permanent magnet, so there is a magnetic field, obviously. And the magnetic field is placed. Now we are going to test the magnetic field. Yes. Yes. This is a very strong magnet, of course. Okay. वर्तमान आम कौन करिया कि परमानेंट मैग्नेट विथ इट्स फील्ड आमे मैग्नेट फील्ड को कॉइल रो सेंटर रे प्लेस करिया स्टेडी you see the magnetic field is there but there is no induction, so this is the magnetic field only. Now आमे magnetic field को change करिया by giving some motion. The change in magnetic field creates the induction. As the speed of motion changes, so frequency changes, so induction also, the frequency of induction also changes. Yes. So now bottom line is, to make induction we need a change in magnetic field. एमती गोटे मैग्नेट दरकार जार स्ट्रेंथ टा कंटीन्यूअसली बदलु थिबो. आ गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट को गोटे कॉइल को जदि हमें सप्लाई दोचे देन इट इज अ मैग्नेट. जदि डीसी सप्लाई दोचे, जदि डीसी सप्लाई रो वोल्टेज को हमें कंटीन्यूअसली चेंज करबा देन इलेक्ट्रोमैग्नेट रो स्ट्रेंथ भी कंटीन्यूअसली चेंज हो, बिकॉज़ पावर चेंज होला एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कंटीन्यूअसली चेंज हो. So how will change the voltage continuously? By good luck, we have AC. AC is nothing but a changing voltage from 0 to 220 in one direction, then 220 to 0, then 0 to 220 in other direction, from again 0. So the voltage continuously changes from 0 to a value, then again 0 to another value, again 0. So continuously change in voltage actually continuously changes the field of electromagnet strength. And that change in electromagnetic strength actually the cause of flux link. सेथिपाई इंडक्शन हुए. तो इंडक्शन पाई the main important thing is change in magnetic field, not the fixed magnetic field. So that's why AC can create electric field induction, but DC cannot, because in DC there is a fixed voltage, there is no change in voltage. Now we'll observe the basic principle of transformer and why there is an iron core. Sir is showing a meter.
it is called a clamp meter, a clamp kind of structure. Red color clamp is there, you can see. This is the clamp meter, and this meter is used to measure the amount of current flow in a conductor without touching the conductor physically. Without making any direct connection to the conductor, we can actually measure the amount of current flow in a coil in any conductor. So they will observe how this clamp meter actually works. Now sir is connected a load to power supply. So as the bulb is connected and power is given to the wire, so current is flowing inside that wire. Now clamp meter is placed and you can see the reading. It is a inverted view. I can confirm you this value is 0.4 ampere, or you can say 400 milliampere. Now we can change the load. Previously it is connected to a 100-watt bulb. Now we'll change the load. Remember, in 100-watt bulb, we have observed nearly 0.4 ampere. Now we are connecting a 40-watt bulb, or we are connecting this bulb to the same power supply. The voltage same. And now we'll observe the current. This is 0.1, nearly 0.1 ampere. So now my question is, if the power source is same and the voltage given to the bulbs are same, but yes, the wattage of two different bulbs are different, but source is same, then why the ampere reading is different? We have given the same power or different power, but our plug point is same. And एठी हमें clamp meter जो देखिले, the clamp meter actually works on this principle of electromagnetic induction, because the clamp of this clamp meter acts as a secondary coil, and the wire inside this conductor on which we want to measure the current, that wire itself acts as a primary. So the primary coil, when we give power to it, there is a electric field, and that electric field is measured by this clamp meter. You can see this is a clamp meter. There is a coupling at the joints of this clamp. When you close that couple, it becomes a closed loop, and that closed loop actually acts as a secondary coil, which induces a certain power, a very tiny amount of power to the circuit, and that tiny amount of power actually proportional to the primary conductor. And by applying certain algorithms, we could able to measure the current without physically connecting to the wire. This is the very example of electromagnetic induction. Using this principle, we could able to measure very large amount of currents using our small tools in a very safe, safety manner without direct touching to the power line.
now I'll discuss one more topic based on this electromagnetic induction. Before induction, I have told ki if I give AC supply to a coil, its magnetic field strength changes, right? So you know how this speaker works. Inside the speaker there is a coil, and these are the two terminals of this coil. When you give alternating current to it, AC, the magnetic field strength of this coil changes, and that coil is placed inside a permanent magnetic field. So inside a permanent magnetic field, if I put a electromagnet, and electromagnet is placed in such a way that is freely suspended, it can vibrate easily. So because of the magnetic field of electromagnet and permanent magnetic field, there will be a repulsion. If I change the voltage, the amplitude of supply to this coil, the magnetic field strength changes, so the repulsion will also change. If I give a alternating current in such a way, so that the coil will repel very fastly, it will create a vibration, and that change in coil, that fluctuating coil, that floating coil is connected to a film. It connected to a film called diaphragm. When the coil vibrates, this film vibrates, and that vibrating of film causes a wave in the air, and that vibrating air wave comes to our ear and makes our eardrums vibrate, which causes to listen that sound, right? So from here we can conclude that the audio signal is nothing but a alternating power which voltage changes continuously in very fast manner in the frequency of our voice. At that speed, its amplitude changes, which causes the change in magnetic field in this inside this coil. And because of the steady permanent magnetic field, the changing magnetic field coil deflects as it is allowed. It deflects, and at the same time, it causes a vibration in the film. So what happens if we give DC supply to this speaker? What happens? And what happens if we give a change in DC supply in very slow way, like 1 hertz, 1 second mein voltage will go to this speaker is works in 12 volt. So 1 second it will raise the voltage till 12 hertz, and 1 second will raise down the voltage till 0, and 12 hertz and 0. Whether this vibration will be visible? No, sir. No. Let's see. We will do the experiment because we believe in evidence, as sir told. We will do this experiment now. So I'll request sir to attend the session, and I'll make the arrangements. धन्यवाद शिवाशीष सर. I hope आपण माने शिवाशीष सर को सहित कम्युनिकेशन करिकरी किछिटा फंडामेंटल आइडिया कलेक्शन करि पारथिबे. ठीक ना भूल आज्ञा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, से बर्तन आपण को कमिटमेंट करचंती आ गोटे सेटअप जोगाड़ करिकरी आपण को संग संग देखेबे. एडा सब कथा होची कोन की माने आलोचना समय रे बेले बेले गोटे नुआ प्लान आसी जाए. जो प्लान टा हमें मन करंतु रेकॉर्ड डाउन करिनु तांको पाखरे, किंतु से बुद्धिटा अछि केंति का फटकिना होची देखे दे परिबे. दैट इज इंपोर्टेंट. कि एडा हमर प्लानिंग रे नथिला, किंतु आलोचना रे बाहरला. तो कौन बाहरला एवं रिजल्ट कौन होची? ही इज रेडी टू शो एंड वी विल एंजॉय. नो प्रॉब्लम. बर्तमान पर्यंत आम जी डेमोन्स्ट्रेशन देखे चलू
आपण माने हमको टिके फीडबैक दियंतु कोन कोन हमें बुझैले कोन कोन बुझी हलानी कोन समझते साइलेंट की सर जो प्राइमरी सेल तैयार करबा सर केते राउंड अराउंड केते राउंड नेले सर आही परिबो सर जो तळे जो मैग्नेट जो करला प्राइमरी सेल टा वासु सर अराउंड केते केते राउंड देले से प्राइमरी कॉइल टा ही परिबो सर कॉइल आमे जोटा हमरो एठी करिकरी रखिकरी आपन को देखैलु सर सेटा टिके अधिक एक्सपेंसिव करके रखिछु काहे कि ना लाइफ लॉन्ग यूज करले भी सेटा हमरो डैमेज होवार नाही हां सर किंतु आपण जते बेले गोटे सेटअप करिवे से कॉइल सेटअप टा टिके रविंद्र बाबू देले से जो दीटा को कॉइल अछि केते 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 केले राउंड अछि देखि कह देले हां मु कह दोछि मु आपन को गोटे डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप जोटा आपण माने करि पारिबे हां स्कूल में ता विषय रे टिके आईडिया दोछि एबे तापरे से शिवासी सरकर सेटअप रेडी हे गेलन देखिबे एठी मार्क करंतु ये गोटे छोटिया कॉइल टे हम करछु डेमो पाई का सर यादरे तार पड़ीची पाखा पाखी 1000 टन हां सर 1000 आ गेज होची हां 28 गेज 28 गेज हां आ बॉबिनर लेंथ होची 2 इंच हां सर एटा बोर्ड कम ले चलीबो मिनिमम आपण 28 गेज तार 500 टन देले भी आपण एठी तार एंड रे आपण 220 यूज करिया दरकार नहीं आपणकर लैब रे गोटे 12 वोल्ट रो ट्रांसफार्मर रखिबे जहार 12 वोल्ट माने एसी यूनिट टा या देहरे देबे हां त एवं एठी हमें आपन को या परे एटा को भी कनेक्ट करके देखेबू देखो एठी मो पाखरे आ गोटे कॉइल अछि जो कॉइल रे गोटे एलईडी लागि छी सर देखा जाउ जे एलईडी टा हां सर अच्छा ये तार आपनकर 200 टन पड़ी छी हां ये किंतु टिक्के सामान्य मोटा ये 28 गेज थला बेले ये आपनकर 24 गेज ने आइ छी हां तो हमें एबे देखंतु गोटे लोहा रड नेचु से लोहा रड भीतर एटा को रखिबू तापर एटा को रखिबू हां सर एवं एठी जो टर्मिनल दीटा को हमें हम हाथ रे अछि मो हाथ रे जोटा अछि टिके फोकस करंतु कैमरा को हमें एठी 12 वोल्ट रे एसी दवा सर देखि देखिबा हमर एलईडी टा जळुची कि नाही जदी जळी गला ताले आपण जानिबे जे हमर डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप रेडी सर बस सेटा हम सेकंड या पर करबा बर्तन स्पीकर रो कोन करूतले सर प्लानिंग रेडी हो जाय छी टिके देखिबा आइले तो बढ़िया है जिनसटा आज्ञा माने गोटे पिला बा आमे निजे निजे निजु पिला बोली भाबिबा ताले आमे देखि पारुचे जे स्पीकर को जतबेले से गोटे अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी दउचंती आपण मार्क करि पारथुवे डायफ्राम टा जा को जोटा हमर गोटे पेपर रो डायफ्राम मात्र सेटा केमति आगो पछ होउची देखंतु ऑसिलेट करूची ओनली 5 हर्ज रे देखंतु से केमति आगो पछ होउची आ जदी से फ्रीक्वेंसी टा को बढ़े चलीबे धीरे धीरे आपण मार्क करि परिबे तार ऑसिलेशन टा भी से अनुसार बढ़ी चलीबो वर्तमान धीरे धीरे बढ़े लेनी कैमरा रे भी विजिबल होउची एठी तो मु देखुची मो स्क्रीन रे डायफ्राम आगो पछ होउची बढ़िया होचे सर बहुत बढ़िया होचे हां इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन कि केमति का आपनकर कंटीन्यूअसली गोटे मोशन होउची आ धीरे धीरे आपण साउंड टा को सुनी परिबे जते बेले 20 हर्ट्ज पाखा पाखी पहुंची जिवो दिस इज नाइस साउंड आपन को सुना जाई पारि थांता जदी हमर आ गोटे सेंसिटिव माइक्रोफोन टेबल ऊपर थांता मु किंतु जो माइक्रोफोन टा यूज करछि इयरफोन रे सेटा आपनकर नॉइज कैंसलेशन कर दोउची तेणु कथा छडा अन्य जिंस किछि नउनी I hope you are enjoying the continuous inflow and outflow of the diaphragm of the speaker in your front. এটা বড় মানে বিউটিফুল ডেমনস্ট্রেশন
एवं केमिति स्पीकर रु साउंड टा बाहर एटा हो तार गोटे डेमोन्स्ट्रेशन यस तेणु एटा भल होला बर्तमान मु शिवाजी सर को रिक्वेस्ट करिवि एई कॉइल टारे 12 वोल्ट रे एसी दबार गोटे व्यवस्था करबा वर्तमान किस समय पाइका हमर टिके डिस्कशन टा जारी रहू फॉर 2 मिनिट्स आउ किछि कथावार्ता करिवेनी कि आपण माने अच्छा स्मृति मैडम टिके कथा हेबे सर आगे कोन सर कौन ऑब्जर्वेशन कले आज रो डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप रे एवं कोन एक्साइटमेंट हला टिके सर बहुत एनालिसिस करबा सर बहुत भलो डेमोन्स्ट्रेशन सर आमे किछिटा इतु जदी आमे करि परले ताले पिलान को भी देखि हबो सर जो ट्रांसफार्मर आपण जोटा बिगिनिंग रे जोटा कॉलेज जोटा टर्न रे सेटा जो रोटेट करूची सेटा मते बहुत भल लागला सर माने हमर जो बडो सेटअप टारे आज्ञा जोटा टर्निंग इफेक्ट देले सर आपण सेकेंडरी कॉइल रे जोटा रोटेट करूची आ तार रोटेशन टा केते ता फास्ट विषय टिके डिस्क्राइब करनंती आपण निजे प्लेटफॉर्म रे सर सेटा तो हमर इंडक्शन रे होची जोटा जेतु आपण दीटा मोटर फिट करिसेंती तार दीटा एंड रे आ सेटा गोटे लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल गोटे आमे जदी कहबा सेटा सब्सटेंस अछि तो दीटा फोर्स क्रिएट होची ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन और दीटा फोर्स टा कॉज करूची गोटे आमे सेटा को कहूची गोटे कपल ऑफ फोर्सेस सेटा गोटे मेकानिकल फोर्स जनरेट कला आ सेटा को हमर सेटा लिंक हिला टू द टर्निंग इफेक्ट सपोज आमे पिलान को जेतल पढौचे टर्निंग इफेक्ट टा कोन होचे आमे गोटे टैप टा ओपन करूचे कि गोटे डोर खोलुचे डोर रो मझिरे जदी तार एटा लागि ची तो आमे ताकू काहे कि अधिका फोर्स दबाको पडुची तो ए जो जिंस गोडा जेतल पिलान को पढेबा कि डोर रो एज रे जदी हैंडल टा लागि ची तो आमे कम फोर्स रे ओपन कर दोचे तो ए गोडा सब छोट छोट जिंस जोडा कि टर्निंग इफेक्ट रो अछि तो एटा भी तांको देखि हबो एटा गोटे केमती रोटेट करूची जोडा प्रोपेलर आपण लगे कि देखितले सेटा करी हबो आउ गोटे सर थिला आपनकर जोटा पावर टा वेरी करूची तार इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब इज गेटिंग वेरिड जोटा आपण मूव करूथले फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल सेइतरे हमें कोन लर्निंग करले सर सेटा एक्चुअली तार अछि कि तार पावर टा वेरी करूची जोटा इंड्यूस होची तार गैप को ने कि पावर इंड्यूस टा वेरी करूची सेटा केवल तार कंक्लूजन सर जते हमें गैप बढ़ौचे कमौचे ताकू ने कि एक्चुअली तारो मैक्सिमम पावर टा तार पोल पाखरे आसुची जेतबे सेटा पूरा पाखरे प्राइमरी कॉइल रे पाखरे रहउची सेटा सेते बेसी इंटेंसिटी तार अधिक रहउची ब्राइटनेस टा बढ़ुची ता माने सेटा अधिक पावर सेटी शो करूची दैट्स नाइस तापर आउ कोटा को आलोचना करिया को चाहउचंदी सर आ गोटे फ्रीक्वेंसी रो जोटा आपण देखैले सेटा ऑसिलोस्कोप रे सेटा भी भल लागिला सर बट फ्रीक्वेंसी ऑसिलोस्कोप एटा तो प्रैक्टिकली क्लास रे देखेबा इज नॉट पॉसिबल हमें तो स्कूल रे ऑसिलोस्कोप पर कोन से एबे मु एई सी गोटे सुझाव देबी एबे आपनकर कंप्यूटर जेहेतु हमर अछि लैब रे कंप्यूटर को ऑसिलोस्कोप रे कन्वर्ट करिया पयका गोटे किट मिलुची अमेज़न रे आपण मान जदी चाहिबे से किट टा किनी किनी 1200 टका पड़छ शिवासी सर केते पड़छ से 3000 पड़छ से किट टा मैडम से सर कहउछंती से किट हां हां कोन सर हम स्कूल ले सर ऑसिलोस्कोप गोटा अछि and we are happy that we could able to know the use of that बढ़िया हला आपण ताको आगो को नै जालंतो आउरी जोठी अछि तार इस्तेमाल करंतु तापरे any suggestion from any others एबे हमर फाइनल राउंड रे हमें पहुंची सर मोर गोटे क्वेश्चन अछि सर गोटे सिंपल डाउट अछि बट आई डोंट नो एक्जेक्टली मो एटा केमती कोठी पढी छी जे जोटी हमर पावर ता जनरेट करा होची सपोज हमें गोटे हाइडल पावर प्लांट विषय कहले जोटी पावर ता जनरेट होची सेटी नॉर्मली माने कोन हुए ना वोल्टेज ता को बहुत हाई करा जाय
सेटा खाली मु जत्ति की जानि छि कहूछि जे दैट इज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी एटा ठीक की भूल सर हमें सेटा को स्टेपिंग अप करा जाए कोन पई सर हेलो एबे कोन सर मोर क्वेश्चन ता सर अपन सुनी परले नै अल्प सुनी की टिके डिस्टर्ब हे गेली मते एबे कोन सर सर मो कहे कथा सर जोटा हमर पावर जनरेट होची सपोज जोटी भी पावर प्लांट अछि हमर एटा सर एमती पडिली कि स्टेप अप करा जाउची वोल्टेज टा को बहुत हाई करा होची सो दैट हमर जोटा ओवरहेड केबल रे लॉन्ग डिस्टेंस जे सेटा मैं ट्रांसफर करूचे सेटा पाई कि केमती सेटा वोल्टेज हाईटा केमती कंट्रीब्यूट करूची जे हमें सेटा सेफली वी ट्रांसफर इट टू माने जो लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा मु जति की जानि छी मु आपन कोशिश करूची सुनतो आपण सर आगे हेची कोन की माने हाई वोल्टेज जते बेले आपनकर कन्वर्ट करा होची ट्रांसफार्मर यूज करके सेते बेले करंट ता बहुत कमी जाउची अच्छा बुझले करंट ता कमी जीवा फल रे एक्चुअली जो ट्रांसमिशन लॉस इज ड्यू टू करंट ओनली ट्रांसमिशन लॉस इज ड्यू टू करंट ओनली तेणु करी करंट को कमे दिया जीवा फल रे सेम एनर्जी ट्रांसफर होउची किंतु आपनकर ट्रांसमिशन लॉस ता कमे दिया जाउची अच्छा तले से ठीक अछि मु जोटा कहली सेटा एक्चुअली लॉस जोटा को हमें मिनिमाइज करूचे आज्ञा सेटा करके बाय रिड्यूसिंग तले तार से गोटे ही रीजन गोटे से स्टेपिंग अप कराउची ओनली टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी आज्ञा आगे थैंक यू सर हां आउ कोन अछि को सर मानकर टिके आगु को आसंतु प्लीज मु डायरेक्ट भिड़िकी तो आपन को आनी परिबिनी जदि आपनकर इच्छा जदि अछि किछि कथा हबा को ए मौका टाकू टिके छाडंतु नाही सर एक्सक्यूज मी सर क्लास 8 रे हमरो फैक्टर्स डिस्कवरी अल्प टिके दिया है जी कि जोटा अपन देखेले कि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल एरा सब क्लास 10th लेवल रे अछि हमें 8 रे जो सर जस्ट सिंपली गोटे हमें कॉइल टे नै करी देन अगेन हमें कॉपर वायर रैप करके से बल्ब लगेबा मैग्नेट टाको आगो पछो करे कि देखेबा माने जस्ट इनिशियल स्टेज रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जस्ट सेटी इनिशिएशन है छी मु टिके सुनिला परे आपन को एती सुझाव देबी सर बल्ब रो गोटे सिंबल देइचंती से माने एवं गोटे जळुची बोली गोटे लाइट बाहरची बोली गोटे देइचंती गोटे एनिमेशन नै कि आज्ञा सर किंतु प्रैक्टिकली तो सर प्रैक्टिकली सेटा हो ना कोनोसी छोटो कॉइल रे गोटे मैग्नेट को मूव करगिरी बल्ब को जळै हुए नाही तो सर सेटा हो ना है तो सर सेटा हम किति पिल्ला को बुझे परिबा सेथि पे का आपण केवल गाल्वानोमीटर टा यूज करके देखेबे डिफ्लेक्शन टा आ कोन करा जाई परबा हम तो सेया करछु एठी सर गैल्वानोमीटर यूज कर सर जो मैग्नेट को मूव करबा सर सेटा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रे जदी हम मूव करछे देन ओनली गैल्वानोमीटर स्लाइट डिफ्लेक्शन शो करिवो नाही मो सर आपन को हमें देखेलु जदी कहबे मु आउथरे शिवासी सर को टिके कहबी देखेबा को मैडम चाहउचंती से जो गैल्वानोमीटर रो डिफ्लेक्शन टा मैग्नेट रो मूवमेंट सहित सेटा आउथरे टिके देखै दियंतु से टिके निजे देखि दियंतु केते मूवमेंट हेले केते डिफ्लेक्शन होउची बुझ पारछन मैडम मैडम यस सर हां से सेटअप टा को टिके देखंतु कैमरा फ्रंट रे फुणी रखा गला सर मैग्नेट टा से बॉक्स से रखी दिया हिची बाम पटे थुआ हितला देखो कॉइल अछि गैल्वानोमीटर अछि आगे सर दिस इज योर मैग्नेट yes sir acha the magnet the bar magnet which is available in the school I was using that नै आपण नियोडायमियम मैग्नेट किछि किणी के रखिया को पड़िबो लैब रे for that आपण मार्क करंतु मु खाली टिके माइनर मूवमेंट करछि से केते जोरे डिफ्लेक्ट करछि sir this setup we don't have ना सेटअप का पाखर न थाए ए सेटअप टा हम हातर तयारी टेक्नीशियन माने हमको सपोर्ट करचंती बोली गोटे सुंदर जिंस आपण पाई पारुचंती किंतु आपणकर निज लैब रे आपण निजे गोटे छोटिया सेटअप टा करि परिबे जोथरे सुंदर न देखा गले भी डिफ्लेक्शन तो हबो सर से मो छोटो से बार मैग्नेट जेटा अवेलेबल है सेटा को यूज करी करथल तो हो नथला आपण देखंतु मु आपण को कहया को चाहू छी आपण कोड रहउचंती सर भुवनेश्वर
अच्छा अमेजन रे नियोडायमियम मैग्नेट सर्च करके मगांतु जो दरकार पड़िबो मु आपनको सपोर्ट करबी को मैग्नेट हेले भलो हबो बोली हला आज्ञा तो आपण आनी करी देखंतु केते बढ़िया होची याटू आउ बेटर कोन हां सर एटा तो बहुत भलो देखा जाउची एई खर्च पाइका देखंतु मु गोटे खर्चटा को बजेट कर दोची गाल्वान मीटर 500 टका पड़िबो हला सर तार सर कॉइल पाइका सर एक्सक्यूज हां हां कोंतु नहीं आम स्कूल तो मु जस्ट गोटे प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब ऊपर नै कि वायर राउंड करी कि गाल्वानोमीटर दीपट रे एंड करी कि कनेक्शन कर दे कि गोटे सिंपल मैग्नेट जोटा कि स्कूल रे अवेलेबल ताकू जस्ट पसेले ये कले गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देखौची आगे आगे आराम रे हबो आपण व्यस्त हेबेनी मैडम देखिए खाली सेटअप टा क्लियर हवा दरकार तार आपनकर मिनिमम 111 गुडेबे कि 50 गरा गुडेबे तापर डिफ्लेक्शन विल बी ए मस्ट विल बी ए मस्ट 50 घरा करी कि जस्ट गोटे प्लास्टिक मे बी मैडम से जो मैग्नेट मु जोटा यूज करछि बोले तार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाय छि कि हे जायथिबो आपनकर से मैग्नेट को रिप्लेस कर देले बहुत दिन पुराना सर हां हां मैडम आराम से हबो आपण जस्ट पसंद ये करन हमर भी पुराना मैग्नेट किंतु काम दोउछि अच्छा ओके मैम आई विल ट्राई इट अगेन थैंक यू एबे हमें आपन को गोटे नुवा मल्टीमीटर रो इस्तेमाल देखेबू सेटा होची इंडक्टेंस मीटर आपण से विषय रे कोन मतामत दबाक चाहुचंदी इंडक्टेंस ऊपर आपनकर निजस्व कोन आईडिया क्रिएट करिसंती कि न करिसंती टिके कोंत एनी आईडिया रिगार्डिंग इंडक्टेंस सेटा टिके देखे दो ना आ गोटे हमर टीम गोटे नुआ डिजाइन करूचंती वर्तमान टिके देखिबा आइले सेटा आपनकर गोटे नॉर्मल मल्टीमीटर बुझी पारचंती आपण माने नॉर्मल मल्टीमीटर रो जो कनेक्टिंग प्रोब सेटा आपनकर सेटअप टा को से माने देखौचंती आपण टिके देखंतु नॉर्मल मल्टीमीटर गोटे तार दीटा को टर्मिनल को कॉइल रो दीटा को टर्मिनल रे अटैच करा गला एवं मैग्नेट को मूव कले मार्क करूथिबे जे डिफ्लेक्शन अल्प बहुत होउची दिस इज फॉर ए नॉर्मल मल्टीमीटर मु तो निजे देखि परुची स्क्रीन रे बढ़िया होउची दैट्स अ गुड आइडिया जदि का पाखरे गाल्वानोमीटर नाइ मल्टीमीटर अछि मन करंतु ए भलिया हेई पारिबो किंतु गाल्वानोमीटर टा भल लागे काहे कि ना बोथ साइड मूवमेंट हमें पिला को देखि पारछे एबे इंडक्टेंस ऊपर मु टिके शिवासी सर को रिक्वेस्ट करबी टिके आपन को देखेबे से जो वेरिएक्ट टा को देकिरी जो लैम्प टा हमर कम बेसी होउतला से डेमोंस्ट्रेशन टा टिके देखेबा तारे गाल्वानोमीटर पाखरे तो स्पीकर पछरो मैग्नेट टा को मूव करिके देखातु रीडिंग टिके आसीबो हबो आराम रे काहे कि सेथरे भी बढ़िया मैग्नेट अछि अन्य मैग्नेट किनिया दरकार नै स्पीकर पछरो मैग्नेट रे भी हेइ दिबो एग्जैक्टली ना एथरे देखेबानी खाली वेरिएक रे हमरो जो वेरिएशन टा करेबा देखेबा वर्तमान रेडी रहंतु आ गोटे सेटअप डेमोंस्ट्रेशन नेले हबो हमें गोटे डिवाइस टे किनिथिलु आपनकर ई साइंस प्रोग्राम पाई का यात्रा पार्टी रे जोटा को यूज करा जाए अपन माने ऑब्जर्व करथिबे थिएटर रे लाइट को कम बेसी करिया पाई का गोटे डिवाइस हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सेटा टिके मन रखिबे एवं जो माने देखि नांती एबे सेही नुवा सेटअप टा को टिके देखंतु टेबल ऊपर लैंप गोटे थुआला आ से नुआ सेटअप टा को टिके कैमरा रे फोकस करंतु से जो गोटे मंदिर भलिया देखा जाउची हाथ मरा है जा देहरे वर्तमान सेटा होची गोटे डिवाइस ता देहरे आमे 220 वोल्ट रो सप्लाई को देइकरी टिके खाली माइनर मोड़ीले यू विल सी से जो लैंप टार जो ग्लो केते परिमाण रे आमे एडजस्ट करी पारुछे
देखो फिलामेंट तातीबाठू आरंभ करी भाई आमर जेतिकी जेतिकी टर्न करूचंती ता नॉब को लाइट ऑफ कर देले से बोल हाँ लाइट एबे ऑफ करा गला आपण माने मार्क करंतु से लैंप टाको मो हाथ को दियंतु मु धरिबी देखि जो देखा जीवाटा और बढ़िया हबो एमती लैंप टाको टिके धरि पकेबा वर्टिकली भल लागिवो हाँ सर माने लक्ष्य करंतु जहाँ भी ग्लो अच्छी सेटा को केमती के वेरी करा होची using the knob on the top. This is a very funny device. Red hot condition रू धीरे धीरे फुल ग्लो दियाला एई डिवाइस टार दाम 4000 टंका पडुची मार्केट रे एई डिवाइस ता जदी मन करंतु हमर लैब रे रहिबो आपण एसी जो वोल्टेज दरकार सेही वोल्टेज पाई परिबे धरतो जनकर दरकार पडुची 120 he can get 120 जदी दरकार पडुची 12 he can get 12 जदी दरकार पडुची 5 you can get 5 याठू भलो जिंस आ कोन थाई पर हमर लैब पाई का इस ए गुड आईडिया बर्तमान मोर कहा था कोन एठी कि हमें 12 वोल्ट दे कि से एलईडी टा जळे बारियानी आ गुटे एलईडी खाली गुडे दोनांती ता टर्मिनल ले सेटा को बाहर कर देगिरी वर्तमान हमर मेंबर संख्या लगभग 25 आउ कोन बाकी रहि गला जदी आपण माने मने पकई पारिबे सर टिके ट्रांसफार्मर जो फॉर्मूला ऊपर हमर टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स ता ऊपर सर टिके किछि आइडियाज देई हबो की देई हबो ट्रांसफार्मर फॉर्मूला देई हबो ता ऊपर आपण कोन कोन जानि चंती टिके आगे मते टिके रिव्यू कर दियंतु सर हमें जो स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन करू छु केमती नंबर ऑफ टर्न संगरे तार वोल्टेज रो रिलेशन का केमती कोन ऑल्दो पिलां को दरकार होनी बट टिके जोटी पिला टिके एडवांस जानिया पे चाहू छी हमें टिके जदी इंट्रोडक्टरी किछि आइडिया पिलां को दे परिबा फ्रॉम दिस जनरेशन टू तांको केमती से माने से जो स्टेप अप स्टेप डाउन ता केमती डिफरेंशिएट करबे इन टर्म्स ऑफ अच्छा नंबर ऑफ एते टर्न्स देखंतु गोटे हाँ मु बुझिले आपन कथाटा को मु एटा को एई क्वेश्चन टा को ट्रांसफर करबी शिवाशी सर को पाखो को आउट के परे किंतु मु जति की पढी छी मने अछि मोर बुझ पारछंती आगे आगे मन करंतु आपण मार्केट को गले गोटे बैटरी एलिमिनेटर करिया पेंगा गोटे ट्रांसफार्मर आनिले जो ट्रांसफार्मर टाको आपण तांको पछारिले जे आज्ञा मोर 5 एम्पियर रो गोटे 12 वोल्ट रो ट्रांसफार्मर दरकार हला तो से आपण को गोटे ट्रांसफार्मर देले आपण जदी तार टर्न जदी सपोज जानिया को इच्छा करिवे जदी प्राइमरी रे मन करंतु 2000 टर्न दियाई थिबो ताले तार सेकेंडरी रे 12 पाइबा को हेले से अनुसार बहुत कमाई करी आखा पाखी 200 आड़े दिया हो कथा बुझ पाले सर हमरो मोबाइल फोन रो चार्जर मोबाइल फोन रो चार्जर सेत्री सर कोन प्रिंसिपल एठी यूज होची मोबाइल फोन रो चार्जर टारे तो एबे मु आपन को सेही क्वेश्चन टा वर्तमान पुनी मु एबे डेमोन्स्ट्रेशन परे हमर गोटे डेमोन्स्ट्रेशन रेडी हे गला आपन मानकर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन पाई का फिक्स सेटा आइडियल बहुतु दीटा को कॉइल टिके आगो सा दीटा को कॉइल टिके आगो अलगा अलगा करी देखाई दियंतु कैमरा रे ता परे जाकरी ताको पावर दवा एबे टिके सेटअप को फोकस करंतु आपन माने देखंतु गोटे रड देखा जाउची आयरन रड आमे गोटे पीढ़ा रे बसेला बेला बसे दीचु दीटा कॉइल आपन को देखेबु वर्तमान गोटे कॉइल रे लंबा तार लगेइछु ता देहरे आमे 12 वोल्ट सप्लाई दबु 12 वोल्ट एसी सेटा रखि तळे तळे रखिलु
ता ऊपरे आ गोटे कॉइल बनैचु लो टर्न रो आ तार दीटा को एंटर गोटे एलईडी लगी गला से ता ऊपर थोला एबे देखंतु तळ कॉइल को हम जदी एनर्जी दबा से 12 वोल्ट रो आपण देखिबे निज आखि रे ऊपर कॉइल टार एलईडी जळिला एवं सार टिके ऊपर कॉइल टाको टिके हाथ रे टेकी की देखंतु सेही एका नियम रे जेतबेले तळ को निया होची ग्लोटा बढ़ुची ऊपर को निया ले ग्लोटा कमी जाउची तो एठी जदी टर्न्स कथा आलोचना करिवे आपण मार्क करंतु तळ कॉइल को आमे 12 वोल्ट एसी देइछु एवं ऊपर कॉइल टा जेहेतु एलईडी जळुची ता अर्थ 3 वोल्ट क्रिएट होउची so it is a step down transformer तण तळ कॉइल रे जदी मन करंतु 500 टर्न अछि ऊपर कॉइल रे आपनकर लगभग 100 टन अछि बुझला कि मैडम ए विषय रे बर्तमान शिवासी सर को टिके मु डाकुची से टिके आपन संगे आलोचना करिवे कि टर्न्स रो कोन केमति कैलकुलेशन हुए स्टेप अप और स्टेप डाउन यस मैम एग्जैक्ट आपन क्वेश्चन ता कोन मैडम सर जदि हमें पिलावान को किछि इंट्रोडक्टरी आइडिया दबा पई चाहेबा सपोज हमें तांको पढौचे वन ऑफ द एप्लीकेशन है हमरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे हमरो एटा प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होची ट्रांसफार्मर रे हमें वोल्टेज स्टेप अप करूचे कि स्टेप डाउन करूचे तो सेठी हमें तांको केमती गोटे किछि इंट्रोडक्टरी जे टिके अधिका जाने पई चाहूची ताकू जणेबा जे नंबर ऑफ टर्न्स ता हमें केमती कोन वेरी करेबा केते करले हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज पाकरे हमें हमर जहा दरकार आउटपुट रे हमें एति की वोल्टेज चाहूचे सपोज मु 240 टा को मु ड्रॉप करली मते 12 वोल्ट दर तो सेमती सर नॉर्मली पिला को किछि बुझेबा पई से रिलेटेड Okay, madam, देखो from the basic principle of transformer, we all know transformer हमको दीटा वाइंडिंग हमें बनेवा तो हमको प्रथमे जानिवा दरकार नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेशन करिया पूर्व द फर्स्ट स्टेप की हमरो अवेलेबल वोल्टेज केते और हमरो रिक्वायर्ड वोल्टेज केते द अवेलेबल वोल्टेज इज रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी साइड हमें केते इनपुट दबा केते वोल्ट इनपुट दबा जो ट्रांसफार्मर में बनौचे whether it is a step up transformer or step down transformer or isolation transformer actually there are three type of transformers जदि हम इनपुट वोल्टेज रो आउटपुट वोल्टेज कम अछि so we are actually stepping down the voltage then we need a step down transformer जदि हम इनपुट वोल्टेज रो हमको आउटपुट वोल्टेज बहुत अधिका दरकार so we need a step up transformer जदि हमको इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज दरकार समटाइम्स एमएटी भी दरकार पड़े फॉर दैट विल डिस्कस ऑन ए स्पेशल टॉपिक कि हमको गोटे ट्रांसफार्मर दरकार जोठी इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वेयर द टर्न रेशियो इज 1:1 प्रथम स्टेप तो नेक्स्ट टॉपिक आमे जानि गले वर्तमान वोल्टेज कोन अछि नेक्स्ट टॉपिक मानि नियंतु कि हमर इनपुट वोल्टेज अछि 24 वोल्ट एसी हमको आउटपुट रे दरकार 5 वोल्ट एसी so now we need to calculate कि for 24 volt AC how much turn I need and for 5 volt how much turn I need right तो ताको जानिया पई सबुठु easiest method हला there are lot of heavy calculations very complicated calculations to find the actual number of turn for that you need to take account the size area of coil you need to know the area of cross sectional core सर ता माने हमरो जोटा सिंपल ट्रांसफार्मर फार्मूला अछि सेटा केवल वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स को खाली रिलेट करूनी वी हैव अदर फैक्टर्स आल्सो दैट कम्स एंड कंट्रीब्यूट टू द नंबर ऑफ टर्न्स सर सेटा मते टिके खाली जानिबार स्कूल लेवल मैडम हमें जहां फार्मूला पढिचे we only know the ratio between primary to secondary we don't know the number of turns सर
No. We only know the Sir, ratio. रेशियो सर मानि जदि वोल्टेज रो रेशियो टा मु जानि दोउची सपोज मु जानली मोर वोल्टेज रो रेशियो एटा स्टेपिंग डाउन होची तो वोल्टेज रेशियो V1 V2 रो जानली कि VP VS रो जानली तो सेही हिसाब रे नंबर ऑफ टर्न्स रो रेशियो सेति की रही जबो कि ना नो देयर आर अदर फैक्टर्स No, आल्सो number of turn ratio, number of turn ratio is same, but again we need to calculate ki how many numbers. मानि नियंतु ratio is 10:1. So whether the number of ton is 10 ton is to 100 ton, or 100 ton is to 1000 ton, or 500 ton is to 5000 ton. सर सेटा मु बुझिली सर आ गोटे जिंस होची जदि अलगा किछि फैक्टर कंट्रीब्यूट करछि सपोज मोर जेमति कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल भितरे हमर गैप कोन अछि कि गैप रे किछि जिंस हमें फील करूचे सेही सबु जिंस रो किछि रहूची कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नंबर ऑफ टर्न्स यदि मु किछि डाइलेक्ट्रिक देली कि किछि मटेरियल देली बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल Yes. So does it affect the number of turns I need in the secondary coil? Definitely, definitely. It is मतलब sir अपन related. practical जिंसटा डील करूचंदी सो सेति पे मु पचाली एटा अफेक्ट करे कि 100% अफेक्ट करे आमा बुक रे जहां भी लिखा है जी as per the ratio concern we actually assuming the distance between primary and secondary is neglected, we assuming the loss in transformer is neglected, we assuming the inner core is over the outer core, there is no physically displacement is there, एक कोर के ऊपर और एक कोर है, ये सब बहुत सारे assumption लिया गया है, ठीक ना? तो से assumption गुड़ा को हमें यदि practically करूँ चे we cannot assume because practically we can make the distance between two coils zero. Exactly. So सेटा मु पचारती sir exactly. At that point the output voltage will decrease. Lot of losses are there. We have to because theory रे हमें सोड़ा calculate करी ना हमें omit करी है जे, but practical रे those are affected because हमें हाथों रे जो handmade tools बनो चे छोटिया transformer handmade बने ले, so we can't concern कि how to minimize loss. So yes, say part goda ko practically that is theoretically possible, but actually when we do we know that there losses energy is happening. So सेठी आपन को secondary number of turn अधिका करिया पड़ियो to get the required voltage. Yes सेटा सर देखे मु सेटा पचारुची जे से जो रेशियो टा हमर exactly same रोनी सेठी हमको as per our requirement हमें ताको vary करूछ. बिल्कुल जेतेबेले हमें assume करूचे कि we are neglecting the losses as the transformer efficiency is 99.9%, so losses is nearly 0.001%. At that condition our calculations are true. सर हमें जेतेबेले पढुथुलु भी हमें सेमती बुक रे भी क्लियरली लिखा है तो नेग्लेक्टिंग दिस कि हमरो एटा को अज्यूमिंग दिस सर सेटा पई कि सेटा थियोरेटिकली पॉसिबल कि हमरो ए रिलेशन हां तो नेग्लेक्टिंग जोडा लिखा आइथिला से पॉइंट को हमें नेग्लेक्ट करि परिबानी. So now we'll observe certain more things about the inductance factor of a coil. We have a RLC meter. This meter actually used to measure the inductance of a coil. Actually, this RLC meter is useful to measure resistance, capacitance, and inductance. It's a tool which we can use to measure the inductance value and resistance value and capacitance value. So as our coils are inductors, so this tool will use to find the inductance of our coil. Let's observe some certain things. What is the inductance of our secondary coil? Let's see. Now our knob is tuned to micro Henry range, and we are getting nearly 2.9, nearly 3 micro Henry, 2.98, nearly 3 micro Henry. And it is not when we put it in the inside iron core, the inductance increased nearly 16 micro Henry. Nearly 5 times its inductance property improved nearly 5 times by using iron core. Now we have a transformer. We got a transformer from market, and we'll measure the inductance because the transformers available in market, they are very professionally built. So of course they take a lot of care to minimize the losses. Let's see.
It's 1 means we have to increase the range. Where is the range, sir? Where is the range? It is micro or milli? Milli. Okay. Okay, now we are getting nearly 40 millihenry. Between end to end, right? If we change the tapping, as per tapping ratio, the Henry will change. And in the high voltage side, of course, the inductance will be much more. We have to again change the range. It is nearly 6 Henry, 5.8 or nearly 6 Henry. So more is the inductance factor. So it's the ripple factor is more, the resistance is also more. So it is the high voltage side. In the low voltage side, the inductance factor is low because of low winding. Now आमे गोटे छोटिया बहुत ही सिंपल वे देखिबा हाउ टू मेक ए ट्रांसफॉर्मर इन योर ओन लेवल कि आमे निजे गोटे ट्रांसफॉर्मर केमिति तयारी करि परिबा गोटे वेरी सिंपल सेटअप इजीली अवेलेबल एलिमेंट्स फ्रॉम मार्केट जोटा कि बहुत इजीली आमे मार्केट रो प्रोक्योर करि परिबा एंड मे बी हमरो पाखरे भी थाई पारे. So using those things will make a small transformer and also will try to minimize the losses. I'll request sir to focus the camera for this setup. Okay. So from the welding shop, we'll request them and we'll get a shape like this. You can see गोटे फ्लैट ने है जी से फ्लैट मझरे गोटे नट अछि ए भलिया शेप रो एक्चुअली साइड रे जो दिटा होल अछि होल्स आर नॉट मैंडेटरी सेटा दरकार नै बट हमको गोटे एमतिया ई शेप रो सेटअप दरकार जो सेटअप रे सेंटर रे गोटे नट थिबो. Yes, now it is clearly visible. We need this setup. एटा हमें इजीली जे कोनोसी इवन वेल्डिंग दुकान रो भी बहुत ही कम कॉस्ट रे याको पाई परिबा. Next we'll make a bobbin like this. गोटे we need this kind of thing and we have to ensure कि inside this blue, this is a pipe kind of thing and it should be hollow. We have made it using some cardboards. And we need another iron piece. Yes. We'll place the bobbin like this. And another iron rod with a hole in the center, we'll place it like this. Yes. So this is the complete setup. And it is a transformer. We can make this kind of transformer at a very, very low cost. And the loss is very, very minimum in this kind of setup. And in the bobbin, we'll actually both the windings in the same bobbin. First, we'll try to rotate the primary and then secondary. And we should take care for the number of turns, of course. What is the gauge of the wire, sir? Gauge of the wire, you can take nearly 22. 24, 22, 24 is okay. Actually, transformer रे high voltage side रे current कम flow हुए, low voltage side रे current अधिका हुए.
So for high voltage side, you can take 30 gauge, and for secondary side, you can take 24 gauge. That is ideal for this kind of setup. We have also two different gauge of windings. These windings are made with 24 gauge, I guess. Yes. So this is the first setup for making a simple transformer where both primary and secondary wounded in a single bobbin. Now we'll show another simple setup where we'll isolate primary and secondary two different bobbins, so which will help you to make your students easy to understand that this is primary and this is secondary. For that, again, we need a iron flat. With yes, this kind of setup. This is very simple. We just need two simple iron flats with two different holes in each, and we'll place when we'll assemble the setup like this. First bobbin go to the first knot, second bobbin go to the second knot, and then we'll place the loop bar. Okay, now we'll tighten the screws. This closed loop iron core is very important. It will help you to minimize the losses. If you make the upper iron flat open, then also it will work, but there are the losses is maximum. To minimize the losses, we need a closed iron core. And this core must be a metal, preferably iron. Must be iron, because other than iron, if you use any other metal, then losses will be maximum. So minimize the losses, you need a iron, and you should ensure ki if the iron is soft iron, then that is better. But this one is perfect. Okay, we'll do the demo. So with this setup demonstration, our program will be over. Now what they are doing, I showed you there are two coils, and one coil is connected to LED, and the other coil we will provide 12 volt source from our dimmer. And you will see the LED is supposed to glow. And we are now conducting this using 12 volt AC. Remember, this is a safe voltage. You are not getting any kind of shock here. Nobody is going to die using 12 volt system. So preferably in our lab, we should have a 12 volt transformer, and we will use that energy to energize our demo transformer. So पुणी थरे आपण मानक पाखकु फेरी जीवा को चाहूची हम पाखरे वर्तमान 20 जण पाखापाखी टीचर्स अछंती. आई थिंक से 20 जण हेले डेडिकेटेड टीचर्स हमरो ए क्लब पाई. सबु डेमोन्स्ट्रेशन गुडा को केमती लागिला? अन्य माने किछि किछि कहबा को टिके आवश्यक पडुची किछिटा कहंतु. Sir, I want to tell something, sir. Sir, actually, I am not dealing with the higher class students. I am teaching up to standard 8. Bodhya. But sir, what I have learned from the transformer, what is that induction, how it works, and how to demonstrate in front of students. केते बढ़िया लागला कहले?
That's so nice, sir. I have learned so much things from here, Hmm. and how that coil that work due to the induction effect. That also I have learned. Well, it is just to recall the what I've learned in my during that +2 time, and during that physics honors also. So yes, sir, I've enjoyed a lot and learned so many things. आपण एबे कोठी रहउचंती सर? Sir, ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି sir. अच्छा बढ़िया हला आपण माने निजे सिखि गला परे केतेबेले दरकार पड़िबो आपण माने यूज करिवे एबे देखंतु डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप टा रेडी एई डेमोन्स्ट्रेशन रे हमर आजिर प्रोग्राम कंप्लीट करिवु मो हम जोटा एबे हातरे आपण का आगरे करूथलु गोटे सेक्शन रे प्राइमरी पुरैलु आ गोटे सेक्शन रे सेकेंडरी पुरैलु एवं सार हमर 12 वोल्ट सेक्शन को 12 वोल्ट देले एवं एलईडी जळुची ता मध्य मु भी देखि पाउची आपण भी देखि पाउथिबे वर्तमान हमर सार को मु रिक्वेस्ट करिवि से जो मेटल फ्लैट टा से वर्तमान खोलिबे खोली देला परे आपण देखिबे से एलईडी टा वर्तमान जो जळुची आ जळिबोनी दैट इज इंपोर्टेंट से एलईडी टा से फ्लैट टा खोल देला परे मैग्नेटिक लूप टा कंप्लीट हेई पारिबोनी तेणु एनर्जी रो जो इंडक्शन टा लेवल कमी जिवो एवं सेटा आपनकर आउ जळिबोनी सेतिकी हमें एबे फोकस करिया को अनुरोध करूची हमर टीम को It's a dedicated team working for your development, sir. Mane. I hope अपन माने एत्ते गुडे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम देखि सारी लेनी किंतु मु भाबुची हमरो डेमोन्स्ट्रेशन रो क्वालिटी अन्य मानक तुलना रे कोन किछि कम अछि एबे देखंतु फ्रंट रो मेटल प्लेट खोली दिया हैछि एलईडी जळुनी एबे आपन को सामने रे से मेटल प्लेट को पके दिया जिवो एवं आपन देखिबे एलईडी केमति जळुछि सप्लाई टा कोन ठीक अछि ना कटि गला कोठी एबे जळला बहुत सुंदर भाव रे डेमोन्स्ट्रेशन हेजी तेणु मैग्नेटिक सर्किट टा कंप्लीट हबा पाई आपन को फाइनली मु शिवासी सर को रिक्वेस्ट करजी देखाई दियंतु से जो कमर्शियल ट्रांसफार्मर रो कोर टा केते इंपोर्टेंट तार देखंतु कोर रो मझी सेक्शन टारे प्राइमरी सेकेंडरी दीटा को गुडा हिची जोटा मु आजी बनैथिले आपन मन को देखेबा लागि हमरो से सेटअप टा को भी टिके हाइलाइट कर दियंतु से जो ब्लू पाइप लागि जे जोथरे सेटा को मझी रखि दियंतु सेटा होची माने हमरो स्कूल लेवल रो प्रोग्राम पाए का दिस इज आइडियल एमती गोटे रेक्टेंगुलर लूप बने देबे वेल्डिंग दुकान रु गोटे यू शेप बने करी ऊपर गोटे आई शेप आ मझिरे गोटे बोल्ट वेल्डिंग रे लगाई देबे होल करी करी मझिरे जो कॉइल टा रहइबो सेही कॉइल टारे प्राइमरी सेकेंडरी दीटा को गुडा हम मन रखंतु सेटा आपनकर काम आधा पोर्शन प्राइमरी तार गुडेबे आ आधा पोर्शन सेकेंडरी गुडेबे एवं 12 वोल्ट रो इस्तेमाल करिवे तापरे देखिबे 12 वोल्ट एसी रिमेंबर 12 वोल्ट डीसी नुहे तापरे आपनकर प्रोजेक्ट विल बी ओवर सो आई होप आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय प्रोग्राम नाउ बिफोर आई क्लोज माय प्रोग्राम ऑनेस्ट रिक्वेस्ट जदि किछि कथा बाबू अछि गोटे मिनिट टाइम दिया होछि जे लेट अस डिस्कस और अदरवाइज वी विल क्लोज इट
chat box रे कौन अच्छी chat box रे किसी नहीं should we close all of you Thank you, sir. Thank you for such a nice program. अच्छा काली Thank you, 3:30 रे हमर सेशन अछि ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग तेणु आपनकर से अनुसार मैनेज करिवे टाइम and tomorrow will be the end of our total program. So till tomorrow we are now leaving the session. So thank you for such nice Thank you, sir. demonstration. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Okay sir पुणी मिसिवा केबे सुविधा हले